जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 20 इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज का टास्क है प्रोग्राम टू प्रिंट न्यूमेरिक पैटर्न। ऑब्जेक्टिव है टू प्रिंट द न्यूमेरिक पैटर्न यूजिंग अ फॉर लूप विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड। ये प्रोग्रामिंग आपको समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड पाइथन लूप। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, जहाँ पे प्लेलिस्ट में आप फाइंड कीजिए पाइथन से रिलेटेड वीडियो, जहाँ पे आपको इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो पहले आप उसे देख लीजिए, तो आपको ये प्रोग्रामिंग इजीली समझ में आ जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट न्यूमेरिक पैटर्न की थोड़ी थियरी। We will learn pattern of various types like pyramid and star in earlier practical 90. So here the concept is same. So there will be different pattern created by writing different lines of code, but the basic program consists of two for loops, where in the first outer for loop for rows and the other inner for loop for columns in the pattern. The print function to print the output and the input function to get the user input. And the range function used will iterate the loop between the starting range mainly from 0 and ends with an integer number whatever the user input. So let's first discuss the step to print or to pattern in Python. So steps are the same as we discussed in the earlier practical 19. So we use the below steps to print a pattern in Python. First, decide the number of rows and columns. So there is a typical structure to print any pattern, like the number of rows and columns. We need to use the two loops to print any pattern. Use nested loop. The outer loop tells us the number of rows and the inner loop tells us the number of columns needed to print the pattern. Accept the number of rows from user using the input function to decide the size of the pattern. The second is iterate loop. Next, write an outer loop to iterate the number of rows using a for loop and range function. Then third, iterate column. So next, write the inner loop or nested loop to handle the number of columns, and the internal loop iteration depends on the value of the outer loop. Fourth, print a star or number. So use the print function in each iteration of nested for loop to display the symbol or the number of pattern like star or number. And fifth and final, that is add new line after each iteration for outer loop. So add a new line using the print function after each iteration of the outer loop so that the pattern display appropriately. So there is a 5 step in this kind of pattern. So first, decide the number of rows and columns. Second, decide the iterated rows. Then third, iterated column. Then fourth, print star or number. And fifth, add new line after each iteration of outer loop. So try to understand different 6 styles of number pattern with the help of Visual Studio Code. Let's first the Python program numeric pattern. Python program for numeric pattern. So this is the pattern 1. In this one style, what we ask for, so in the first row we see the number 1. In the second row it will consist number 2 and 3. The third row the number consists 4, 5 and 6 and so on. So this is the kind of pattern we want with the help of this particular program. So how it is there? So first let's decide one variable k equal to 1.
अब मुझे कितनी रो के लिए इस तरह से पैटर्न चाहिए, 5 रो के लिए चाहिए या 6 रो के लिए, तो मैं रेंज दे देता हूँ। तो 4i in range let's say 0 to 5। तो ये मुझे कितने रो देगा, 1 2 3 4 एंड 5 रो देगा। नाउ अब वही मुझे चाहिए कॉलम के लिए ऑपरेशन। तो कॉलम में मुझे क्या करना है, 4j in range 0 to i plus 1। पहले मुझे 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद मुझे इंक्रीमेंट करना है रो में, और वहां पे मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट पहले करना है 1 that is a k, then and with the space, and with space। okay, so k and with the space। now increment the k, क्योंकि मुझे बाद में दूसरी में क्या चाहिए, 1, उसके बाद 1 2 3, तो increment k, so k equal to k plus 1, and finally the print up to the last given range of the rows। so that is a simple pattern. Let's try to execute this one with the help of this Visual Studio Code. First save this, then run this. So Python main.py. So you can see this, first 1, then 2 3, then 4 5 6, then 7 8 9 10, then 11 12 13 14 and 15। so here 5 rows are there, 1 2 3 4 and 5। okay, so this is a simple one pattern with the help of Python program. Let's do another pattern. The pattern 2. So in this pattern, what you required, print number 1 in the first row, then number 1 2 in the second row, number 1 and 2 in the second row। so in third row, yes, it is number 1 2 and 3, number 1 2 and 3 in the third row, and so on। so there is the required operation for the second pattern number। okay, so let's start from the range for I in range, let's say 0 to 5, 0 to 5, then say number equal to 1 or column j in range 0 to I plus 1। एक के बाद एक नई रो में कौन सा ऑपरेशन करना है कॉलम में, क्योंकि हम कॉलम के ऑपरेशन में डालेंगे। तो उसमें क्या करना है, पहले मुझे करना है प्रिंट नंबर। पहला होगा नंबर 1, उसको बाद में देना है स्पेस के साथ एंड। ये हो गया नंबर 1 पहली रो में, कॉलम में वो स्पेस। बाद में मुझे वो नंबर इंक्रीमेंट करना है, हर एक रो में वो नंबर इंक्रीमेंट 1 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 रो 4 लूप में डाल दिया। इसके पहले के प्रोग्राम में देखा होगा कि नंबर मैंने और के वेरिएबल था वो बाहर था, 4 लूप में नहीं था, यहाँ पे वो अंदर है। तो नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 एंड फाइनली प्रिंट। So Control S, then first clear, and then run this program. So you can see 1, then 1 2, then 1 2 3, then 1 2 3 4, and 1 2 3 4 5. So that is the second style of number pattern. Now let's understand or let's see another pattern. That's the pattern 3. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इस तरह से कि to AND the row with the square, with the square the row number by using 2
for loops and increment the number variable value by 1। मतलब कि पहला 1 है तो बाद में दूसरा रो होगा वो कब तक होगा, एंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, तो 2 3 4। अब थर्ड कहाँ कंप्लीट होगा, थर्ड रो, तो थर्ड स्क्वायर क्या होता है, 9, 5 6 7 8 9। उस तरह से 1 by 1 रो काम करें। सो लेट्स start doing this kind of program with the help of this particular Python. So let's start with number, let's say 1, then increment 1, then for I in range 0 to 5, for colon j in range 0 to increment 1। ओके, 1 से हमें स्टार्ट करना है। सो फाइंड करना है फॉर रेंज 0 to इंक्रीमेंट जो भी होगा उसी हिसाब से हमें उस कॉलम में ऑपरेशन होगा। तो रेंज 0 to इंक्रीमेंट, देन प्रिंट नंबर, पहले 1 से स्टार्ट होगा, देन एंड विद द स्पेस एंड इक्वल टू स्पेस, देन नंबर हर एक बार इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर दैट इज इंक्रीमेंट बाय 1, सो नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। ये कब तक होगा, तो जो हमने तो रोज जितना नंबर के लिए दिया है, और इंक्रीमेंट क्या होगा, 2 स्टेप में होगा। सो इंक्रीमेंट दैट इज इंक्रीमेंट प्लस 2। तब नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 के बाद, जैसे कि यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1 plus 2 तो 3। तो इस तरह से इंक्रीमेंट स्टेप बाय स्टेप रहेगा। लेट्स सी द काइंड ऑफ पैटर्न विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड हियर। ओके, सो फर्स्ट लाइन में होगा 1, दूसरे में होगा 2 3 4, 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर इज द लास्ट एलिमेंट, 4 स्क्वायर इज द लास्ट एलिमेंट, एंड 5th स्क्वायर इज द लास्ट एलिमेंट। So this is the another pyramid number pattern with the help of Python program. Hope you understand and enjoy this kind of programming. So let's do another kind of patterns. Let's say pattern 4. अब यहाँ पे क्या पैटर्न मुझे करना है कि पहला 1, बाद में 2 1, बाद में 3 2 1, बाद में 4 3 2 1, ऐसा रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो चलो उसके लिए पहले लिख देते हैं क्या करना है मुझे इसमें। तो इसमें पहली लाइन में होगा प्रिंट द नंबर एंड प्रिंट इट कॉलम वाइज, प्रिंट इट कॉलम वाइज। हाउ, लेट्स से फर्स्ट कॉलम will start with specified range like 1 2 3 4 and 5. The second column will start from row number second, and third second and third column will start from row number and so on। इस तरह से मुझे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो तो इसके लिए पहले हम ऐसा 5 के लिए कर रहे हैं, तो चलो हम ऐसा लिखते हैं लास्ट नंबर है 6, तो लास्ट नंबर है, तो मैं 5 के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो लास्ट नंबर मैंने ले लिया 6। तो 4 रो इन रेंज
1 comma last number. Now for column, in range, I और J की बजाय मैंने रो और कॉलम डायरेक्ट लिख दिया, तो for column in range row 0 comma -1, क्योंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना, तो then print column and with space and print the last line. So first control S. Let's run this program. And 8 for row in range 1 last. Okay. Now clear. Okay, so first is 1 1, then second. Okay, clear this error. Then easily. So 1, then 2 1, then 3 2 1, then 4 2 4 3 2 1, then 5 3 2 1. It stop at 1. Okay, last is 6 is there, so that's why it stop at this one. Okay, hope you understand and enjoy this kind of pattern programming. Now let's do another pattern in this numerical pattern. So let's select this one and now pattern 5 control S. So यहाँ पे क्या करना है, ये सिमिलर है लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर करना है. Similar kind of pattern 4, but here consider square of the number. So ये तो सेम ही है. So चलो लेते हैं last number equal to 6, then 4 I, ये रो है तो इसमें मैं आ लेगा, रो ले तो भी चलेगा. I in range 1 comma last number, then for column for J range ये होगा -1 plus I, then -1 comma -1. Print format 2 power of J, क्योंकि कॉलम हर एक में स्क्वायर करना है तो 2 power of J, और उसमें स्पेसिंग चाहिए तो इसमें ले लेता हूँ यहाँ पे 4D. बाद में मुझे एंड करना है विथ स्पेस, तो एंड विथ स्पेस प्रिंट. Let's clear this one. Sorry. Okay, so let's run this program. Control S. Python 9.5. So you can see 21421 8421 16841. So this kind of result we get with the help of this Python number pattern structure. So let's do another one, our last one in this particular program, pattern 6. Delete this, clear this one. So print the number in the reverse order. Print the number in the reverse order in right angle pattern. So चलो
उसके लिए क्या लेते हैं, पहले स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप मुझे 2 पे करना है और स्टार्ट मुझे 1 से करना है, तो स्टार्ट 1 और कर लेता हूँ मैं करंट, एक ले लेता हूँ करंट नंबर दैट इज इक्वल टू स्टॉप। मुझे क्योंकि ये उसमें क्या है, रिवर्स में जाना, तो मुझे स्टॉप कहाँ करना है, जब लास्ट में मुझे ऐसा मिले कि 2 मिले, लास्ट 2 सेकेंड रो में, तो लास्ट मुझे 2 मिले, जहाँ पर मतलब होता है कि अब नेक्स्ट जो भी होगा वो 1 पे स्टॉप हो। तो चलो रिवर्स ऐसा करना है, तो करंट नंबर इज स्टॉप, देन फॉर रो in range, let's say from 2 to 6, then for row in range 2 to 6, for column in range start to stop, current number equal to my current minus 1, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस इक्वल टू 1। इसमें करना है प्रिंट करंट नंबर, उसको एंड करना है, तो मुझे लिखना है, तो यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे होगा करंट नंबर और यहाँ पे होगा एंड, तो एंड इक्वल टू, then print up to the last of print, then start equal to stop. Now increment the stop with the number of rows, so stop equal to stop plus rows, so stop plus equal to row, and current number equal to stop, equal to stop. Okay, so let's save this program. Okay, current number stop, so row in range 2 to 6, or column in range start to stop, current number is equal to current number minus 1, क्योंकि हर एक बार मुझे डिक्रीमेंट हो चाहे करंट नंबर का, रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिखना है इसलिए, और प्रिंट करंट नंबर, तो एंड। Let's run this program. Python. Okay, so 1 3 2 6 5 4 10 9 8 7. Hope you enjoy this kind of number pattern with the help of Python. So we can actually create so many different style of number pattern using the for loop and the while loop with the help of Python programming language. If you enjoy this video, kindly share with your friends, like, press the button, then comment. Thank you. Have a nice day.